गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है फेक रिव्यूज़ ऑन ई कमर्स साइट्स। गवर्नेंस के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक न्यू स्टैंडर्ड निकाला है, इंडियन स्टैंडर्ड 19,000 2022। बेसिकली जो आपके ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यूज़ होते हैं उसके लिए ये स्टैंडर्ड निकाला गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स द्वारा। तो आपको पता है कि फेक रिव्यूज़ जो होते हैं आपके, कभी भी आप कुछ परचेज़ करते हो, अगर आप उसके नीचे फेक रिव्यूज़ आपको बहुत ही ज़्यादा तारीफ़ वाले दिख जाएँ, तो आपका उससे कंज्यूमर बिहेवियर जो है वो चेंज हो सकता है कि कोई ख़राब चीज़ के ऊपर भी फेक रिव्यूज़ दिलवा के उसको बेचने की कोशिश की जाती हो। तो उसको रेगुलेट करने के लिए इंडिया रादर पहली कंट्री बनी है कि जो ऐसे रिव्यूज़ को भी जो है मॉनिटर करने के लिए कह रही है। तो अब इसमें जो है वॉलंटरीली जो है आपको जो ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं उनको पेड या फिर स्पॉन्सर्ड रिव्यूज़ को जो है रिवील करना होगा। और इससे जो है आपके कंज्यूमर्स को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि कौन सा रिव्यू सच है, कौन सा झूठ है। इंडिया पहली कंट्री बनी है ऑनलाइन कंज्यूमर रिव्यूज़ को जो के लिए एक नॉर्म लाने के लिए। और हर ऑर्गेनाइजेशन को एक रिव्यू एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो रखना पड़ेगा, जो कि जो है बताएगा कि जो है ये रिव्यू जो है ये सॉलिसिटेड है या अनसॉलिसिटेड है। ठीक है। और जो रिव्यूअर्स हैं, जो आपके और मेरे जैसे रिव्यूअर्स हैं, उनको ऑप्शन भी मिलेगा कि वो अपने रिव्यू को विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि टर्की और मोल्डोवा जो हैं, यहाँ पर ऐसी कुछ बिजनेसेस हैं जो कि फेक रिव्यूज़ का काम करते हैं, पैसा लेकर फेवर में रिव्यूज़ लिखते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए इंडिया में जो है ये रिव्यू जो है या ये स्टैंडर्ड लाया जा रहा है, क्योंकि हम इसको एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस मान रहे हैं कि जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ठीक है। तो हम देखते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के बारे में भी। अकेली ऐसी नेशनल बॉडी है जो कि स्टैंडर्ड्स को फ्रेम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंडर आती है। स्टैंडर्डाइजेशन, मार्किंग, क्वालिटी सर्टिफिकेशन ऑफ गुड्स, ये सारा काम जो है BIS का होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है शीशम। आपके एनवायरनमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया को जो है साइट्स की जो मीटिंग हो रही है पनामा में, वहाँ पर शीशम या फिर जिसको आप नॉर्थ इंडिया रोजवुड भी कह सकते हो, उसके एक्सपोर्ट के लिए जो है थोड़ी सी ईज़ मिल गई है। तो एक्चुअली क्या था कि जो है शीशम को अपेंडिक्स 2 ऑफ द कन्वेंशन में डाला गया था, जिससे होता क्या था कि 10 किलो से ऊपर का कोई भी जो है अगर कंसाइनमेंट जा रहा है तो उसको साइट्स के परमिट की ज़रूरत पड़ती थी। और साइट्स उससे क्या होता था कि जो फर्नीचर या हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट करता है इंडिया, उसमें जो है उनकी कॉस्ट बढ़ जाती थी। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, कॉस्ट बढ़ने की वजह से जो है हमारा एक्सपोर्ट सफ़र कर रहा था। जो 1000 करोड़ का पर एनम का एक्सपोर्ट था हमारा शीशम के जो है फर्नीचर का, वो 500-600 करोड़ हो चुका था इस अपेंडिक्स 2 में डालने की वजह से। तो उससे हमारे जो आर्टिसंस हैं उनकी लाइवलीहुड्स के ऊपर जो है वो खतरा आ रहा था। तो अब चेंजेस क्या किए गए हैं, अब ये चेंजेस किए गए हैं कि आपको क्लैरिफाई करना है क्वांटिटी ऑफ शीशम को। और अगर हर जो आइटम जो भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, अगर वो हर आइटम उसका वेट 10 किलो से कम है, तो उसको चाहे वो कितने भी इकट्ठे भेज रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो उसको आप कर सकते हो। ठीक है। हर वेट को जब वो 10 किलो जब वो काउंट करना है, तो उसमें मेटल अगर यूज़ किया गया तो उसके वेट को जो है वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, सिर्फ शीशम के ही नेट वेट को इंक्लूड किया जाएगा। तो इससे हमारे एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, ऑफ कोर्स। ठीक है। पहले उनको क्या होता था कि 10 किलो के आइटम जो है वो अकेले अकेले भेजनी पड़ती थी, अब वो इकट्ठे ही 10 किलो की पर आइटम जो है वो भेज सकेंगे, है ना। सो अब हम देखते हैं साइट्स क्या है। साइट्स एक मल्टीलैटरल ट्रीटी है, प्लांट्स, एनिमल्स और बर्ड्स से रिलेटेड। और इनके किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड या फिर किसी भी इनमें ट्रेड किया जा रहा है तो उसको रेगुलेट करती है। 1963 में IUCN की मीटिंग में इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया था। UNEP के ही हेडक्वार्टर्स में इसका भी हेडक्वार्टर है। और साइट्स जो है वो लीगली बाइंडिंग है पार्टीज़ के ऊपर। अब हम अपेंडिक्स 1, 2, 3 भी देख लेते हैं। ठीक है। तो अपेंडिक्स 1 जो है उसमें वर्ल्ड के मोस्ट एंडेंजर्ड प्लांट्स और एनिमल्स को डाला गया, जैसे टाइगर या गोरिल्ला। इनके तो ट्रेड पर कंप्लीट बैन है, एक्सेप्ट ऑफ कोर्स सर्टेन केसेस लाइक साइंटिफिक रिसर्च। अपेंडिक्स 2 में वो प्रोडक्ट्स डाले जाते हैं जो थ्रेटन्ड तो नहीं है, लेकिन थ्रेटन हो सकते हैं अगर उसका अनलिमिटेड ट्रेड अलाउ कर दिया जाए। तो इसलिए रिस्ट्रिक्ट रूल्स के साथ उसका ट्रेड जो है वो मॉनिटर किया जाता है। अपेंडिक्स 3 में सिर्फ वही प्रोडक्ट्स या फिर वही स्पीशीज़ का ट्रेड जो है वो रेगुलेट किया जाता है जो कि एक स्पेसिफिक कंट्री में ही जो है थ्रेटन है, या फिर एक स्पेसिफिक कंट्री में ही उस ट्रेड को रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रेट निकोबार प्लान। ये भी आपके एनवायरनमेंट के टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने ग्रेट निकोबार प्लान जो है
72,000 करोड़ का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड को डेवलप करने का, उसको मंजूरी दे दी है। 3 फेज में डेवलपमेंट प्रोग्राम चलेगा अगले 30 साल तक। ठीक है, प्रोग्राम ये है कि एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाया जाएगा, एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाएगा, पावर प्लांट बनाया जाएगा। तो ये पोर्ट जो है इसको तो इंडियन नेवी कंट्रोल करेगी, और जो एयरपोर्ट होगा उसको मिलिट्री और सिविलियन दोनों फंक्शंस के लिए उसको कंट्रोल किया जाएगा। ठीक है, अब कंसर्न्स ये हैं कि इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट और फ्रिजाइल रीजन है, ट्री कवर भी लूज होगा, उससे फ्लोरा और फौरा के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट तो ये भी कह रहे हैं कि मैंग्रोव्स को भी जो है वो लॉस हमको देखने को मिलेगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को कहा है कि आप देखो कि कैसे रीव्स को हम रेलोकेट कर सकते हैं, हम कहीं और उनको लेके जा सकते हैं। और जो आपका लेदरबैक टर्टल है वहाँ पर जो पाया जाता है उसका भी कंजर्वेशन प्लान बनाया जा रहा है। और गवर्नमेंट जो है प्रोजेक्ट साइट को इको सेंसिटिव जोन्स के बाहर ही रखेगी, उसको इको सेंसिटिव जोन्स को जो है वो खतरा नहीं होने देगी। ग्रेट निकोबार आइलैंड सदर्न मोस्ट आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। आपको पता है कि अंडमान और निकोबार जो है ये दोनों 150 किलोमीटर वाइड 10 डिग्री चैनल से जो है सेपरेटेड हैं। ठीक है, इंदिरा पॉइंट जो है सदर्न मोस्ट टिप है ग्रेट निकोबार आइलैंड का, जो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इंडिया का सदर्न मोस्ट टिप है। और बहुत सी एंडेंजर्ड स्पीशीज लाइक लेदरबैक सी टर्टल जो है वो इस आइलैंड्स में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन। तो ये आपके इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइनलाइज किया है कि हम दोबारा से इनक्रेडिबल इंडिया विजिट इंडिया ईयर 2023 कैंपेन को रिवाइव करेंगे, ताकि कोविड के बाद जो है इंटरनेशनल टूरिज्म को दोबारा से प्रमोट किया जा सके कंट्री में। तो बेसिकली ये इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन 2002 में शुरू किया गया था, इंटरनेशनल मार्केटिंग कैंपेन है। इंडिया को एक डिज़ायरेबल डेस्टिनेशन की तरह प्रमोट किया जा रहा है इसमें। ऑनलाइन मार्केटिंग भी की जाएगी ऑफ कोर्स, ताकि जो जब G20 इंडिया में होगा तो वैसे भी बहुत सारे टूरिस्ट इंडिया में आने वाले हैं, तो हम उस टूरिज्म को और ज़्यादा कैसे प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, तो टूरिज्म की क्या सिचुएशन है इंडिया में। अगर हम 2018 का आंकड़ा देखें तो 16.91 लाख करोड़ का इसने रेवेन्यू जनरेट करके दिया हमें, लगभग 9.2% ऑफ इंडिया का जीडीपी। और इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022 कहता है कि एनआरआईज जो है वो अगर 2020 के मुकाबले हम देखें तो 2021 में वो 52.6% जो है वो इंडिया में वापस आना शुरू हो चुके हैं। तो बहुत ज़्यादा स्कोप है ऑफकोर्स टूरिज्म का, स्पेशली जब वर्ल्ड ओपन हो रहा है धीरे धीरे, तो है ना। तो इसीलिए हम इसको इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन को दोबारा लेकर आए हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी। सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है उन्होंने नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी जो है वो अनाउंस की है। अब इसमें कहा जा रहा है कि हम टाइम बाउंड एक्शन प्लान्स लेके आएंगे, मल्टी सेक्टोरल कोलैबोरेशंस करेंगे, ताकि सुसाइड मोर्टेलिटी हम लगभग 10% तक रिड्यूस कर सके बाई 2030। साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाएगा सारे डिस्ट्रिक्ट में विद इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। मेंटल वेलबींग करिकुलम भी लाया जाएगा सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में विद इन नेक्स्ट 8 ईयर्स। और मीडिया की जो रिपोर्टिंग है सोसाइटी को उसको भी रिस्पॉन्सिबल बनाया जाएगा। ठीक है, फिर कम्युनिटी रिजिलियंस बढ़ाना, सोसाइटल सपोर्ट देना ताकि सोसाइटी को प्रिवेंट किया जा सके, ये इन सब चीज़ों पर भी फोकस किया जा रहा है। अब ये जो पूरी स्ट्रेटजी है ये WHO के साउथ ईस्ट एशिया रीजन स्ट्रेटजी फॉर सुसाइड प्रिवेंशन के साथ कोलैबोरेट करके बनाई गई है। और सुसाइड का अगर हम आंकड़ा देखें तो लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है हर साल इंडिया में सुसाइड करते हैं। सुसाइड रेट भी जो है 10.2 से बढ़कर 11.3% हो चुका है हमारे पिछले 3 सालों में। और मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो है सुसाइड का, वो रीज़न जो है सुसाइड का, वो फैमिली प्रॉब्लम और इलनेसेस होते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is fake reviews on e-commerce sites. So this topic is important for your governance section. So central government has recently unveiled the new standard, Indian Standard 19,000/2022, which will be an online consumer review standard. And based upon these standards, we will be regulating the ratings that we see on the e-commerce sites. Okay, so this standard has been prepared by the Bureau of Indian Standards. And why we are focusing upon it? Because there is a threat of fraudulent and deceptive product and service reviews which can influence consumer behavior. So all e-commerce players, ranging from travel and ticketing portals to online food delivery platforms, they will be voluntarily required to reveal all paid or sponsored reviews. Okay, so what are the rules? So these rules say that because online reviews influence the consumers greatly, that's why we have to regulate it. And India has become the first country in the world to have such a system or a norm for online consumer reviews. So as per the standard, review administrator will be the person who will be handling this all this review management in any organization. And even the reviewers will be given an option to withdraw their reviews. Also,
This will also be applicable for the independent third party entities which post such reviews on any an online platform in lieu for some money. Okay, you know that there are certain businesses in countries like Turkey and Moldova where where you can contact them and get your favorable reviews in lieu of some in return for some money. Okay, so you have to, with this standard, have to make adequate disclosure also, because the failure to comply with this standard would be considered as unfair trade practices, and the entities may face legal action under the Consumer Protection Act. So what is Bureau of Indian Standards? It's the only national body which frames standards in India. It functions under the Ministry of Consumer Affairs, and it is responsible for the harmonious development of activities of standardization, marking, and quality certification of goods in India. So the next topic is Shisham. This topic is important for our environment section. So India has recently got rules eased for the export of timber-based products made of shisham, or you may say North India rosewood, at the CITES meeting, which is being held currently at Panama. And you know that shisham has been put under Appendix 2 of this CITES convention, which means that any consignment of weight above 10 kg currently requires CITES permit. So due to this requirement, the exports of furniture and handicrafts made of shisham is restricted, and it has been increasing the costs of the exporters, because they will have to obtain the permit for sites for the exports. And this has affected the 1000 crore industry, and it has fallen down to 500 to 600 crore export per annum now. And that's why it is affecting the livelihoods of around 50,000 artisans who are working with this particular species in India. So what are the new changes? So this new changes say that any number of shisham based items can be exported as a single consignment without CITES permit, as long as each individual item is less than 10 kg. Okay, so while calculating this 10 kg limit, the any amount of metal that is being used in such furniture or handicraft will also be ignored. So basically, you can export, let's suppose, 100 items which are less than each of which is less than 10 kg in weight. So otherwise you were having difficulty, because any item which was more than 10 kgs had to for any export of it, you had to take a permit, but now this will not be required. So, what is CITES? CITES is a multilateral treaty which includes plants, animals, and birds, and it was conceptualized in IUCN's meeting in 1963. So, basically, we want to protect any trade in plants, animals, and birds, so as to prevent their species. It is located at the same secretariat, which is it is being hosted by United Nations Environment Program Secretariat in Geneva, Switzerland, and this CITES is also legally binding on the parties. So now let us also see the appendixes. So first, under the first appendix, the world's most endangered plants and animals, and the trade in them is completely banned. Appendix 2 is contains those species which are not yet threatened with extinction, but if unlimited trade is allowed in them, then of course they could become threatened. So that's why there are strict rules for trade in those plants and animals. Appendix 3 are those species in which the trade is only regulated within a specific country, probably because they are under threat in a particular geographical location only. Okay. So the next topic is Great Nicobar Plan. This topic is important for your environment section. So Ministry of Environment has recently approved the 72,000 crore development project in Great Nicobar Island, and this will be implemented in 3 phases over the next 30 years. The proposal is to have an international container transshipment terminal, a greenfield international airport, and a power plant. And the port will be controlled by the Indian Navy, and the airport will have dual military civilian functions, and it will also of course cater to the tourism as well. Okay, but there are concerns also, because this is an ecologically important area and a fragile region. So
environmentalists are saying that there could be loss of tree cover and it will also affect the flora and fauna of the island. Also, they have flagged that there would be loss of mangroves on the island as a result of these development projects. So the government has said that we are conducting through the Zoological Survey of India, and we are assessing how we can relocate the reefs for the project. A conservation plan is also being envisaged for the leatherback turtle. Also, the government is saying that the project site would be outside the eco-sensitive zones of Campbell Bay and Galathea National Park. So, what is Great Nicobar Islands? So, it is the southernmost island of Andaman and Nicobar Islands. It is separated by a 150-kilometer wide 10-degree channel, which of course separates the Andaman Island from the Nicobar Islands. And Indira Point is the southernmost tip of the Great Nicobar Island, or we can also say that it is the southernmost tip of India. Many endangered species are found in this island. Example, the leatherback sea turtle. Okay, so the next topic is Incredible India campaign. This topic is important for your economy section. So, looking at the emergence of international tourism opening, the government has finalized the Incredible India Visit India Year 2023 campaign, and it will be revived so that we can have tourism post COVID. So, it is an international marketing campaign which started actually in the year 2002 to present India as a desirable tourism destination. So, apart from the, of course, traditional marketing media campaigns, there will be also be online marketing of India as a favorable tourist destination. If we look at the figures now in India with respect to tourism, then tourism has generated about 16.91 lakh crore worth of revenue in 2018, which is about 9.2% of India's GDP. And as per the India Tourism Statistics Report of 2022, NRIs have started increasingly visiting India, and has been a 52.6% increase in the arrival of NRIs in 2021 if we compare it with 2020. So the next topic is National Suicide Prevention Strategy. So this topic is important for your social issues. So Union Health Ministry has recently announced a National Suicide Prevention Strategy, and it would provide time-bound action plans and multi-sectoral collaborations to achieve reduction in suicide mortality by 10% by 2030. It will also establish a psychiatric outpatient departments and district mental health program in all districts within the next 5 years. It also seeks to integrate mental well-being curriculum in all educational institutions within the next 8 years, and it also envisaged developing guidelines for the responsible media reporting of suicides. Also, it also stresses on the development of community resilience and societal support for suicide prevention. So basically, all these guidelines are in line with the WHO's Southeast Asia region strategy for suicide prevention. If we look at the figures in India, then more than 1 lakh lives are lost every year to suicide, and it is the top killer in 15 to 29 years of category of people. Suicide rate has increased from 10.2 to 11.3% per 1 lakh population in the past 3 years, and family problems and illnesses can be attributed as the most common reasons for suicide in India. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.